in the cold as temperatures have dipped to 1.9 degrees on Sunday, which was the lowest we've seen till now this season. It's also the second lowest minimum temperature recorded in Jan from at least 2008. Now, Delhi's minimum temperature was lower than most places in Himachal Pradesh. Due to the continuing cold wave in the city, the Delhi government has issued an order to the schools in the area to extend their winter vacation till Jan 15th. The cold wave, along with dense fog, has affected road, rail and air traffic movement. You've had 48 trains, 25 flights be cancelled or rescheduled. The Indian Meteorological Department, the IMD, has issued an orange alert for certain parts of North India. You have that including Delhi. For today, the warning is also that dense fog and a cold wave condition will very much persist. Now, my colleague Shireen brings you this ground report from just a few minutes ago right here in the capital. Take a look. After a respite for few days from the cold wave as well as fog, once again Delhiites are in fact waking up to dense and thick fog in the national capital and the adjoining areas. Right now I'm reporting from India Gate. On my left side is the India Gate and on my right side is Rashtrapati Bhavan, but neither of them are in fact visible at the moment because of the dense fog that is covering the national capital. For the next 2 days, this cold wave, this dense fog will continue in the national capital and also in the adjoining area. We have seen for past 2 days the temperature has in fact dropped to about 1 to 2 degrees in some part of the national capital, and today as well it was around in fact 5 degrees to 6 degrees Celsius. Hopefully by afternoon the temperature will improve. The situation will be much better in terms of the fog, the dense fog that is being witnessed at the moment. But as of now, if you are in fact planning to take out your vehicle to go to work, then be very careful and follow all the traffic advisories that has been put in by the traffic police. सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और घने कोहरे के कारण जनजीवन जो है वो प्रभावित नज़र आ रहा है। कोहरा इतना घना है कि कुछ भी जो है देख पाना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूं और हाईवे पर कितना घना कोहरा जो है छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, यानी कि 1 मीटर पर भी जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में वाहन चालकों को जो है कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल धीमी गति से जो वाहन है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है कोहरे के कारण दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। यानी सर्दी के मौसम का आज सबसे ज़्यादा जो घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। शीतलहर भी जो चल रही है तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है वो प्रभावित है। घरों की धरा पर अब सर्दी अपना असर दिखा रही है और कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। सुबह 7:30 बजे तक तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा किस तरह सर्दी का जो असर है वो एकाएक बढ़ा है और लोग जो है सुबह भी घरों से जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो अभी तक जली हुई है। सुबह सुबह जो सर्दी का असर है उसके चलते लोग काफी परेशान हैं और जो चौराहे हैं उन पर धुआं सी छाई हुई है। सुबह सुबह जो है ये व्यस्तम चौराहे हैं जहाँ पर सामान्यतः काफी लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन अभी जो सर्दी का असर बढ़ रहा है उसको देखते हुए सुबह सुबह जो नज़ारे हैं वो सड़कों पर जो है वो सुने हैं। पार्क की तस्वीरें भी दिखा दूं। पार्क जो है उसमें भी वॉकिंग के लिए काफी लोग आते हैं, लेकिन अभी जो है वो पार्क की तस्वीरें आप देखिए कोई भी जो है निकल नहीं रहा है। सुबह सुबह जो गाड़ियों की हेडलाइट्स है वो भी जली हुई है और पूर्ण रूप से सूर्य देवता के दर्शन तक अब तक जो है नहीं हुए हैं। धुआं जो है वो सड़कों पर है जिसके चलते सुबह सुबह गाड़ियां जो है वो काफी जो है ट्रैफिक लाइट्स जलाकर बच रहे हैं। इस धुआं से काफी जो है धुआं है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। We are on the bank of Dal Lake, and as you know that the phase of Chilai Kalan, that's the phase of 40 days of harsh winters in Kashmir is still going on. It starts from 21st of December and ends at 31st of January. We will talk about the temperature. The temperature is rising from since 2 days. The Srinagar, before a couple of days, the Srinagar breaks the record of around minus 6.6 degrees Celsius. That was the coldest night of the Srinagar. However, the tourist in this season enjoys a lot in Kashmir, especially talking about the Dal Lake. Still, we can show you the tourists here are enjoying this view, and the tourists here are enjoying the beautiful view of Dal Lake and enjoying the harsh winter phase of Kashmir.
Okay, so experts say that it's high moisture over the Indo-Gangetic plains and light winds that have contributed to the foggy mornings that we're seeing over the region. So essentially moisture in the Indo-Gangetic plains, as we just said. Now, just to bring you a little more in terms of details, this is the fourth consecutive day that we're seeing this kind of temperature. This is what scientists describe as cold wave conditions. And according to experts, as we just told you, this is the second lowest minimum temperature recorded in Jan from at least 2008. So we're talking about a more than 10-year span. Now, when it comes to this big question of how long this could possibly last, some experts have said that it's going to last till Jan 10th, which is just one day from now. They say that then it's likely that a western disturbance could affect northwest India and improve conditions over here. Now, we have with us a number of colleagues on the show today to bring you ground reports. My colleague Charanjit is with us live from Sangrur as we speak. गुड मॉर्निंग चरणजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चरणजीत जी, आप हमें बता सकते हैं संगरूर में अभी तापमान कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको बताएं तो हम इस वक्त नेशनल हाईवे बठिंडा चंडीगढ़ पर खड़े हैं और आप तापमान देख सकते हैं कि तकरीबन पिछले काफी दिनों से जो मौसम का है बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ रही है। लगातार मौसम की गिरावट होती जा रही है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 3 से लेकर 4 डिग्री जो पारा है यहाँ पर गिरा हुआ है और लगातार फॉग है जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे बड़ा असर डाल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सड़कों पे आवाजाही है तो बिल्कुल धीमी जो स्थिति में वो चल रही है, क्योंकि जब फॉग होता है तो जो आवाजाही होती है उसमें सबसे बड़ा असर पड़ता है। देख सकते हो कि जो विजिबिलिटी तकरीबन सिर्फ 20 मीटर के आसपास आपको दिखाई दे रही होगी। जो वाहनों की रफ्तार है बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको बता दें ऐसे मौसम में जब दिखाई नहीं देता तो नेशनल हाईवे पे जो ये चिट्टी पट्टियां होती हैं इसी को देखकर गाड़ी चलानी पड़ती है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको कि इन चिट्टी पट्टियों को देखकर ही जो गाड़ी है दिखानी पड़ती है। यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर विजिबिलिटी कम होने के कारण जो यातायात है, आवाजाही है बहुत ज्यादा कम हुई है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हर बंदे को दिक्कत आ रही है, पर किसानों के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो पंजाब में भी गेहूं की फसल बीजी हुई है उसके लिए जो ये ठंडा मौसम है ये फायदेमंद है, क्योंकि जब दाना पकता है तो अगर इतना फॉग आता है तो उसके लिए फायदेमंद है। पर उसके अलावा हर एक स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में भी जो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलें पेश आती है ऐसे मौसम में। लगातार हर एक चीज को जो मौसम में प्रभावित कर रहा है। और आपको आगे की भी बताएं कि पहाड़ों में जब बर्फबारी हो रही है तो उसके कारण भी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। और तकरीबन 12 और 13 को भी अगर वेदर डिपार्टमेंट की बात बोली तो उन्होंने यहाँ पे बारिश की भी चेतावनी दी है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है और लगातार जो ठंड है अपना कहर बरसा रही है। जी ओके, ऑलराइट चरणजीत जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। दैट्स अ रिपोर्ट कमिंग इन टू अस फ्रॉम संगरूर। वी आर गोना शिफ्ट फोकस नाउ. My colleague Shireen is standing outside in Delhi. Let's go over to her. Shireen, good morning. Thank you for bracing the cold. Can you just give us an idea, A, where are you in Delhi? And B, has the fog lifted? I know earlier in the morning it was hard for many of us to get to work. Has the fog lifted in parts of Delhi right now? Well, in fact, the fog has lifted compared to what it was in the morning, because in the morning the visibility level was about 30 to 50 meter, but now in fact the visibility level has increased to about 100 to 200 meter. You can see the inflow of the traffic has also increased with now it being 9 a.m. we are seeing more traffic on the roads, and now the visibility level has also improved. But early morning when I was speaking to you just half an hour back, the visibility level was in fact less than between 30 to 50 meters, and it was very difficult for the commuters who were traveling on road to in fact know whether there is in fact a vehicle in front of them or at the back. So it was of course a very concerning situation. Hopefully the situation will in fact improve with passing hours, but as far as the cold wave and the dense fog is concerned, this will continue for next 2 days is what the IMD has predicted, because for the past 2 days if you see the temperature
temperature has in fact dropped to 2 degrees. In some of the areas it was about 1 degree, between 1 degree to 2 degrees Celsius. Today also Delhiites has in fact woken up to in fact an extremely winter day with the temperature being 5 degrees Celsius.